नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सभी जो एक्सपर्ट ग्रुप डॉक्टर केके एचसीएफआई हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनके सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर केके अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट संडे को भी इस टॉपिक को लिया और ये मे बी 1-2 सीरीज हो सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और हमारी सबकी जो दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है और हम सब कुछ जानते हुए भी बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मे बी सम और द अदर रीजन। गवर्नमेंट है, कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके अपने इश्यू हो सकते हैं बट दे आर आल्सो ट्राइंग, अपनी जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो गैप है वेस्ट में जो जनरेशन और इसका साइंटिफिक डिस्पोजल में बहुत गैप बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज द रियल कॉज ऑफ आल्सो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। हमने लास्ट संडे को इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट मेंबर के साथ डिस्कस किया था और कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो आज हमने जो उसका सेकेंड पार्ट लिया है, लास्ट संडे हमने बहुत फोकस डिस्कस किया था सेग्रीगेशन पे एंड डोर टू डोर कलेक्शन है और किस तरह की अवेयरनेस होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, दिल्ली गवर्नमेंट में हमने भागीदारी प्रोग्राम भी किया सिटीजन गवर्नमेंट पार्टनरशिप का, उसमें बहुत ही सफलता मिली बट कंटिन्यू नहीं हुआ। तो चाहे वो डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट हो, डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन के साथ, तो वो एक सक्सेसफुल रहा बट बहुत जो गैप है वो स्टिल रहा क्योंकि उसमें अगर 20% 30% लोग जुड़ते हैं, 70% नहीं जुड़ते हैं तो वो सफलता नहीं कहते हैं उसको। तो इसलिए हमने आज का जो सीरीज सेकंड में लिया है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में ये बहुत जरूरी है कि ये जो है हम अपने साथ साथ जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम इस जो आज के टॉपिक में म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट जो चैलेंजेस हैं इसमें किस तरह सफलता पा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे अपने एक्सपर्ट मेंबर के साथ कंटिन्यू करूंगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में, दे हैव आल्सो इनिशिएटेड प्रोग्राम और उसमें उन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे एक प्रोग्राम इनिशिएट किया व्हिच इज अलाइन विद द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके अलाइन में है। और इसमें इसका पर्पज है टू कंट्रीब्यूट इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल फॉर गार्बेज फ्री सिटी। इसका एक पर्पज यही था कि मिनिस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज का जो गार्बेज फ्री सिटी को करने में। The program encompasses a variety of interventions in generate waste जो है जनरेशन में, प्रिवेंशन में, कैरेक्टराइजेशन में, मॉनिटरिंग में, ट्रीटमेंट, हैंडलिंग, रीयूज एंड अल्टीमेटली जो रेजिडुअल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन साइंटिफिक मैनर, इसका पर्पज है। और इसमें बहुत से साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे प्रपोजल्स वगैरह भी मांगे और इस पे बहुत सी रिसर्च जो है इसमें चल भी रही है और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। जो बहुत सी रिसर्च लोगों ने जो एनालिसिस किया, स्टडी की, तो ये रिसर्च जो स्टडी स्टेट दैट द मार्केट फॉर जो अब जो है टाइम आ गया है स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। अब हम जो है नॉर्मल जो है सिंपल मेथड से जो कर रहे हैं वो उससे शायद हम जो है जितना पॉपुलेशन का प्रेशर है और जो हर सिटी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉर्मल जो प्रैक्टिस से वेरी बहुत मुश्किल है कि हम इस वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली कर पाए। उसके लिए जो मार्केट सजेस्ट की जो अभी रिसर्च है कि मार्केट फॉर स्मॉल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट will reach $6.5 billion in 2023। एक साल में ये इसका जो $6.5 बिलियन जो है होने जा रहा है। और इसमें बहुत सी जो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इंक्लूड है। जो मेन इंपॉर्टेंट है जो एमआरएफ फैसिलिटीज है, एडवांस एमआरएफ फैसिलिटी है, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं, वेस्ट टू एनर्जी जो कि बहुत दिनों से चल रहा है दिल्ली में। हम तो मतलब आई थिंक इसमें काफी इंडिया में पायनियर रहा है दिल्ली, और दिल्ली ने जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 3 शुरू किए, 2010 से ही शुरू किए थे और उसमें काफी सक्सेसफुल रहा। दो देयर आर सर्टेन इश्यूज
और उसमें देयर इज सम एमिशंस की इशू भी आए और सराउंडिंग एरिया में बहुत सी ऑब्जेक्शंस आए बिकॉज ऑफ दी आई थिंक पोल्यूशन इशू आल्सो और आल्सो निम्बी सिंड्रोम जो हम बात करते हैं। और अभी भी दिल्ली में अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का एक्सपेंशन का जो है मिनिस्ट्री ने जो है क्लियरेंस दिया है, तो उसमें भी जो सराउंडिंग एरिया के ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस थे तो लोगों ने और फर्दर ऑब्जेक्शन से उठाने शुरू कर दिए हैं बिकॉज कहीं भी होता है तो देयर आर सर्टेन एमिशंस होंगे और स्मेल आएगी, कुछ न कुछ तो ये होती है। और वेस्ट टू एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरेटिंग एक्चुअल पावर फ्रॉम वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेशंस इन द वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री कि आपके वेस्ट मैनेज भी हो रहा है, दिस इज अ मेन थिंग। एंड सेकेंडरी इसका बेनिफिट है कि यू आर गेटिंग सम पावर जो आपको डेफिनेटली ग्रिड में ऐड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा पावर जनरेशन नहीं है बट डेफिनेटली इज गोइंग वेरी इंपॉर्टेंट। अदर जो है जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली जो एडवांस जो कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, बायोमिथनेशन है, कंप्रेस बायोगैस है, देन स्मार्ट वेस्ट बिन्स का आजकल कॉन्सेप्ट चला हुआ है, रोबोटिक रिसाइकलर्स के आ रहे हैं बहुत सी सिटीज में, रोबोटिक ट्रैश कैंस का हो रहा है और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज हो रहा है। तो दीज आर द वेरियस जो इनोवेशंस आ रहे हैं एंड वेरी वेरी एसेंशियल्स कि जो पॉपुलेशन प्रेशर में और जो सिटीज जो है एक्सपेंडेड होते जा रहे हैं उसमें हमें जो स्मार्ट जो है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे और आज हमारे एक्सपर्ट के साथ कि इसमें है क्या क्या जो है इनोवेशंस किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज रिक्वेस्ट करूंगा संजीव कुमार जी से बिकॉज वो पहले ही इज इन आरई सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड और रामकी मारो रोड से जुड़े हुए हैं और एक्चुअल फील्ड में बहुत से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं। तो मैं आज संजीव कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा और फाइनली मैं जो फाइनल समअप के लिए अपने मेंटर पार्थोस त्यागी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में सर आपको आज जो है थोड़ा सा इस जो भी होगा एक समअप करेंगे। आज मैं सबसे पहले संजीव कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के टॉपिक पे जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस में उस पर अपना व्यूज दें। ओवर टू संजीव कुमार जी। सर नमस्कार एंड वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ऑगस्ट मेंबर्स हियर all the members. I think the topic which has been started on the 1st of January, especially on may I request all others to please be म्यूट कर लें प्लीज, बाकी लोग तब तक म्यूट कर लें, कुछ लोगों का शायद। So the topic which is very much relevant. म्यूट कर लें बाकी लोग। Ravindra and Praveen Vyas sir, kindly please mute yourself. I think there is a lot of noise coming from your. प्रवीण व्यास जी। रविंद्र जी आप बोलना चाह रहे हैं? You have raised your hand. बाद में कर लेंगे, आप कंटिन्यू करें प्लीज सर। So the topic which has started on the first day of this new year with the topic of municipal solid waste management and especially to the focus of technological interventions required for the management. So this is a very relevant topic and I think it is not only relevant today, it should have been relevant for long back, which needs immediate intervention. So the technology, when it comes to technology, specific with respect to management, the various steps involved into municipal solid waste starts from our household, where how the technology can and is being thought of is that since the technology starts with the management first starts with segregation at source, movement towards collection, tapping the right kind of resource, going to the right place for processing and resource recovery, and then finally the least one going for the disposal, either through whichever means it goes. So when it comes to source segregation, संजीव जी एक मिनट, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्नोलॉजी और सब कुछ होने के बावजूद भी फेल्यूर क्यों हो रहा है उस पर भी जरा फोकस करें। I will try, sir. Definitely, sir.
So the first important is that how technology can be, and most important, because the biggest challenge is segregation, which is the principles for sustainable development or sustainability of any project, especially with respect to municipal solid waste management, is this segregation at source. Now, how segregation at source can happen to the maximum level, which can lead to a situation that the right kind of waste with the right quantity reaches to the right place where resource recovery can happen and least goes to the disposal. In that case, sir, we have to find out interventions, we have to find out solutions, how it can be. If the same can, if we compare to the other sources, which is very well managed, specifically in respect to hazardous waste or to biomedical waste, and obviously to the extent of electronic waste, technology at source segregation is really helping us, because biomedical waste gets through collection with the contagious waste, less contagious waste, and highly contaminated waste, where barcodes of separations goes into different colored bags, and right, each barcode is monitored through where the waste should go, and transportation of the segregated barcoded stored bags goes from collection point to the processing points. So there again, the technology of barcoding the waste, type of waste, is helping to tap exactly and understand for collection. Infrastructure, in terms of technology, it can be, and there can be many more. I think Technological Development Board can find out or help us in finding out or invite EOIs or expressions of ideas, innovations, where we can get the segregated waste collected right from source. Once the segregated waste rights goes from source, then there has to be a mechanism for collection and transportation. Probably if you see all over India, almost 60% to 70% of the waste, and in the last 5-10 years, these figures have gone from 30 to 70%, that waste is getting collected and moving to another place, where whether it is meant for disposal or not, but it is going away. So collection, there is an improvement. How technology, obviously, long driven process, that we should monitor the GPS driven, we should monitor the where tracking of the waste, we should monitor how it can, which place it is going. So these are the order, on time live, we can track the waste where it goes. So that is also, there is an improvement. Still lot of things can improve upon. But here again, there is a further technology which can come into, is putting up a barcode or putting up a weighing scale in the trucks itself, because that is very important, because that weighment of the waste, we need to further track to understand that which type of waste should go where. So that is getting a weighing scale on the trucks. So that right now, because there is so much of other issues coming in one of the discussions here on the forum, we were talking of C&D waste, where some waste mismatch was coming up as to what Delhi generates as municipal solid waste and what is the mix coming in C&D waste. So that is another technological intervention. If required, it needs to be there, and obviously the policy needs to be made into, it is to be mandatory. When it reaches to decentralized points for disposal, either in terms of wet waste or in terms of dry waste, in terms which is called MRFs, and further, if it is not finding any way, then it goes to a waste to energy plant, oblique RDF plant, or finally to the disposal of the inerts into the landfills. Now these two things here also very important is about, like say for example, if it goes to a dry waste which is called going to an MRF plants. Now what exactly MRF plant is coming up in across the country, and a lot of money is getting spent on that, is that they put some trommels which goes for some kind of a sieving, which is nothing more than densification and sieving of the densified waste of different categories into different plots, where again people manpower is involved in just picking up the unwanted material, putting it, segregating and going ahead.
There also a technology is definitely there, which can go through either through optics or through weight density or through the characteristics of the type of the waste, especially when it comes to dry waste. I'm talking only here for the dry waste. So that also the technology in terms of how these segregating machines or the MRF units should have an optical fiber, should have a density measurement fibers, where it can actually put into the collection of the correct waste and segregate it to a better extent. So there also is a technology requirement. In doing all this, the entire thing should be under a manifest system, right? Suppose for Sanjeev Kumar or the house or the apartment which is generating should have a database saying that I do generate so much of wet waste and so much of dry waste, an estimate which needs to be audited by many independent committees, which has to be validated with the regulatory bodies, whether it is municipal corporation or the pollution control board or the infrastructure service providing agencies like PWD or what can be, some people can be there, which needs that this manifest. For example, let's say, I'm just giving you an example. Suppose Sai Residency is a society which is having 600 flats. So Sai Residency at the doorstep should be able to sign off the manifest saying that so much of waste per month is I'm disposing, per day so much of waste. And suppose if it is having a function of, say, suppose some festival or marriage within the societies, then so much of waste has gone up. So this manifest system, right from the collector to the transporter to the disposer, needs to be. And earlier there was so much of paperwork required, but today these paperwork are all on mobile. Everybody can reach and access to where it is going. So there can be a technology intervention with the manifest system, right from source segregation, collection, transportation, and reaching to the plant of disposal or plant of processing. The last but not the least, and the most important, is having a toilet in a house. We don't have a toilet where I mean to say toilet does not mean the last disposal of the shit, but also the place where you clean, where you cleanse yourself. So that place of cleansing of the whole city has to planned in today. Unfortunate part, we don't have any city which has got a planned in the master plan as a solid waste management site, except for a few, where in one case Delhi do have one master place where the solid waste management was planned in the master plan. So this planning of the place in today's scenario has to be there. The issue is that today we don't have place for nobody wants in the nearby places, nobody wants this to be there. So we don't have place of mass where we can have this kind of a processing and disposal facility for the waste management. What do? We have to find out a place where the existing dumps are there. These all dump grounds have to be rehabilitated. It needs to be given an infrastructure status. It needs to be rehabilitated in a way that the entire waste needs to be processed, needs to be developed as a plan for futuristic, considering that this place can cater to next 10 years of plant with so many minimal infrastructure which is there defined as a role, and with that infrastructure parallelly in the next place, maybe say, suppose for example, if I take like Delhi, Ghazipur dump ground should be planned for a, say, suppose 10 years. This dump ground, for some partial land will be kept for the inerts which come out from it, but within this there has to be a processing plant, there has to be a biomethanation plant, there has to be a leachate treatment plant, and there has to be RDF to disposal or RDF to power plant, that is called waste to energy plant. So these are few things which requires to be there without master plan. Why we are not able to do it? We are not able to do it because we are not reading the entire MSW rules in the holistic manner. Probably the MSW rules are there with many things which can need some improvement, and obviously this August committee if can provide some few of the changes, which is ministry as I think is working on some amendments to that rules that needs to be amended, looked into complete holistic manner, and technologies to be brought in, because 2016 to 2022 we have moved very fast in the last 5 years, 6 years, and there are so many issues which is not coming up.
And above all, this need not need to be taken as waste is wealth. I repeat, waste is not wealth. If waste is properly managed, then it is wealth. Otherwise, no infrastructure comes without cost. So this has to be treated, and the waste is, if properly managed, how it comes, very intangible benefits in terms of air pollution, in terms of health impact, in terms of groundwater. The biggest challenge what is right now coming up is that all our material, even many material which we are using, is having a lot of chemicals, which goes as a hazardous portion to the landfills, and the entire leachate has got so many heavy metals coming out of it, and heavy material coming out, which leachate is becoming actually the hazardous. And the leachate is one of the serious things. If it goes into the groundwater, it will reach to situations where all the nearby water bodies and the aquifer may get damaged, which needs to be there. Thank you, sir. If I can carry on, then if somebody has any questions, I would love to repeat and come back. And the best part is that the place where I am, it is very 32-degree temperature. So I wish a lot of people are shivering under cold, and I am feeling very happy in this situation. Thank you. Thank you, Sanjeev ji. Hyderabad, you enjoying there actually? Yeah, that was the. So बहुत अच्छा आपने रियल इशू आपने फ्लैग किए, और बहुत ही इंटरवेंशन की जरूरत है, जो अब फ्यूचर में no legacy waste. That is the, I think that was the, whatever legacy waste is generated already there, we have to manage scientifically, but future mein no legacy waste. I mean, no dump site, I mean, should go to dump site, and only inert waste should go. And the current जो practice है, technology है, we should definitely, चाहे वो government को extra efforts money देना पड़े, this is very important. Otherwise, we will be mess, जैसा आपने बताया कि जो leachate and all that. So very well explained. Thank you, Sanjeev ji. So definitely we'll come back to you again. You are the, I think, इस फील्ड में जो I know that रन की, I think कितने आपकी टोटल अभी कितना मैनेज कर रहे हैं, कितने सिटीज में? Sir, we are operating at 23 locations in municipal solid waste. Yeah. So I think इस pioneer रैम के तो काफी जो है जो स्टार्ट किए थे जो particularly, और जितनी भी आई थिंक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस तो आपका बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वेस्ट एनर्जी प्लांट है और फैसिलिटीज हैं. So thank you, and definitely will come back to you. Now I'll request पहले साहब से कि साहब आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में कोई पॉइंट हैं और you want to say anything. So साहब, you can unmute if you are there. I think अभी उनका म्यूट है. हेलो साहब. सर मैं बोलूं थोड़ा? यस सर. हाँ सर. अच्छा, मैंने कहा हाँ आज का आपका नहीं, मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस में आप कुछ अभी कहना चाहेंगे कि पहले प्रदीप जी को सुन लेते हैं. पहले प्रदीप खंडेलवाल जी आज थोड़ा सा कहीं बिजी है, तो विदाउट वीडियो इनको आप मैंने रिक्वेस्ट की है. तो खंडेलवाल जी सर. नहीं, गुड मॉर्निंग टू ऑल. मैं ये कहना चाह रहा, संजीव ने जो भी कुछ बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी बहुत हो चुका पिछले 6 साल भी की है, और उसके बावजूद भी द रिजल्ट इज जीरो. जितने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहे हैं, अगर उनका ऑडिट किया जाए, जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं उनका ऑडिट किया जाए, जितना भी कलेक्शन हो रहा है गार्बेज का, अगर उसका भी ऑडिट किया जाए, तो नेट रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर कर लिया वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा है. अब ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, इसके क्या रीजन है? पिछली बार साहब ने बहुत सिंपल एग्जांपल बताए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हो पाती. अगर आरडब्ल्यूए के लेवल पे जाए, एक आरडब्ल्यूए बसंत विहार वाली 2008
8 तक बहुत अच्छा काम कर रही थी, 8 के बाद वो बंद हो गई। या कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, कोई भी कॉलोनी है, तो इन सब जगह लोगों में अवेयरनेस भी आ गई, उसके बावजूद भी हम लोग सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। तो बेसिकली ये जरूरी है। डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी इस चीज पे बाकी लोग अनम्यूट कर लें प्लीज। इसके लिए मैं तो आज की मतलब इस फोरम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग प्रॉब्लम एनालाइज करें, कोई भी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और इंटेंशन टू इम्प्लीमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट का भी इंटेंशन है, पब्लिक का भी इंटेंशन है टू इम्प्लीमेंट गुड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। उसके बावजूद ये हम लोग बिल्कुल, चाहे वो कलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो सेग्रीगेशन हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हो, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लैंड फिलिंग हो, हर सेक्टर में अगर ऑडिट किया जाए तो नेट रिजल्ट फेलियर। तो वी शुड डिस्कस ऑन दिस फेलियर, नॉट व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी, एवरीबॉडी नोज कि क्या कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। मैं बस आज इतना ही कहना चाह रहा था, हालांकि पिछली बार भी मेरा इंटेंशन केवल यही था। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू अनिल जी। हाँ थैंक यू। लेकिन इसमें मैं ये चाहूंगा कि इसका जो अगर सोल्यूशन, बिकॉज हम लोग इस फील्ड में हैं और आपने तो शायद कम से कम 30 साल इस फील्ड में काम किया है, तो वी हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशंस आल्सो। तो चलिए आपकी इंटरवेंशन हो सकता है हम नेक्स्ट में फिर फर्दर जो है, आज आप अभी थोड़ा बिजी हैं तो हम आपकी इंटरवेंशन चाहेंगे कि इसमें सोल्यूशन क्या निकल सकता है। जल्दी चलिए, थैंक यू सर। सो नाउ आई रिक्वेस्ट दीपांकर शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप इस आज के व्यू पे, जो आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे अपने व्यू एक्सप्रेस करें। सर सभी को प्रणाम, नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने बहुत अच्छी डिस्कशन किया था कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया वाज नॉट ए प्रॉब्लम इन द पास्ट। इट इज रिसेंटली वी हैव डेवलप्ड इट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक्चुअली वेस्ट को हम लोग क्यों नहीं सेग्रीगेट कर पाया, वो क्यों नहीं हम लोग यूज कर पाया, संदीप जी ने तो बहुत ही सुंदर बताया, वी आर इम्प्रूविंग, बट ऑन द अदर हैंड वी आर वेस्टिंग द biodegradable waste. This is our resource and really it can be used for fertilizer. Those parts we are really not taking care because of the again the Sanjeev also told, because we don't have the proper land use plan and the master plan proper specifically for that purpose. And there are improvements in the collection, whether it is segregated or non-segregated. This is an improvement that we are able to segregate or able to collect 70% of the waste. This is a clear-cut indication that if the people have that tendency to for segregation, for collection of everywhere, we are defining it is the generator who is responsible. But why we in municipal solid waste matter, why we are not able to make responsible the public? Public is not the part of which. It is the municipality, they have been asked to do everything, legal renovations and all these things. Training, we have guidelines, we have. This is missing, and a particular degradable waste that should be used as a fertilizer, and the fertilizer subsidy, the chemical fertilizer subsidy should be reduced, and that should be encouraged so that the micro level, small level entrepreneurs can be developed so that it can be used. Other thing is that
This India, the problem is with the unorganized sector everywhere. The India is suffering because of the unorganized sector. But the waste management, it is managed by the unorganized sector. Now the thing is that what about their, why we are not taking their health and what is the help we can do to them? That part is also missing. And wherever I see their really living condition, etc., is really problematic for us. Those issues, how to manage, I do not know. But I am definitely in favor of using our biodegradable waste, the kitchen waste. That should be utilized and it should not create burden on the technology and it should be burned and for producing energy. I am not really in favor of. Already we are suffering from air pollution issues. We are suffering from other nations issues. So that this decentralized system should have been taken into consideration if somebody is going for this forum and if you think it is really an issue that can be managed, segregated, because we don't have land. And our land should be utilized for agriculture and those parts should be taken care. Sandeep, yesterday you were supposed to come, but you have not come. I was waiting for you. But anyway, Happy New Year to you. Thank you very much. I'll join up just sometime. Huh? Yeah. Thank you, Shah Sahab. Thank you very much for your views. Now I think Dr. Ravinder Palakutti he was in the MGICC. So I'll request him, Ravinder ji, if you can unmute and you can express your views. I think you already in the chat box, but I think request you. Yeah. नमस्कार रविंदर जी, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें. आपका म्यूट है अभी सर अभी. Yeah. Thank you. Very good afternoon to all the esteemed guests. Thank you very much, Dr. Anil Saab, for inviting me to this webinar. Excellent information from Sanjeev Kumar ji as ever. And I actually, when I walk through my neighborhood and in my society, I observe that the garbage, the kind of garbage that pile up in the societies, they are unable to segregate because the individual homeowners are very much happy to drive out their garbage from their homes, but they never try to see that the same is segregated. Even in my society in Delhi, we have almost 500 odd homes, and due to stringent guidelines from the Department of Environment, DPCC, they have created a garbage dump where individual societies are expected to segregate that waste. But again, that is left to these waste collectors. They don't mind. During the night or during the broad day, they will shift that waste to some other dump. And that is how it is happening. If you see in Delhi roads, you have a lot of waste being thrown out of their homes on the roads only. Broken toilets, broken wash basins, unused pillows and mattresses are also thrown out of their homes. And this type of menace is coming because of the indifference from these individual homeowners and individual societies. Everybody is doing tokenism, not truly, because the people like Dr. Sanjeev Kumar, who is really doing the work on ground, almost managing the waste of 16 municipalities is not a small effort. So such type of things should be really done away with, and every individual should, even suppose in my home, just I want to segregate the waste. The garbage boy comes and collects one home. He wants everything in one bag. How can you segregate it? There is a kitchen waste, there is plastic waste, there is electric waste, and there are many other waste kinds of waste, paper waste, and all those waste. We put everything into that particular polythene and then put it in his dustbin. He will take it to the dumping site and he will put it there, and somebody will carry it to the ultimate dumping grounds like in Mukundpur or in Narela or any other place, Bhavana. So this is a menace. Actually, I fear a lot about the future of this next generation. When I see such kind of thing, it is intimidating to see such a garbage piling up in each individual society, and they are unable to dispose it of properly. So definitely there is technology is there, and there are mechanisms with which this can be managed. But the thing is,
the commitment from all the stakeholders, right from the households who are producing this waste and the institutions which are producing this waste, to everyone. They are supposed to really act positively, and they think that we have no time to actually waste now, and we should utilize the appropriate technologies, appropriate code of conduct to manage these waste, sir. I feel proud to be associated with this group. Now that actually I have superannuated from Mahatma Gandhi Institute as a faculty and deputy director, I am relocated to Hyderabad, sir. I just shifted to Hyderabad, and I will be attending very regularly. I would like to contribute the way possible for me to do some work in this field. Thank you very much for your time. Thank you so much, Dr. Ravinder. Thank you. Yeah. So Dr. Ravinder was my colleague in the Department of Environment of the Institute. We worked together in so many more than about 20 years. And thank you. I came to know. I just went to Secretariat. I came to know that you superannuated on the 31st December. Actually, so, I was a core group member in that Delhi State Action Plan and Climate Change, and we have contributed a lot. Last meeting was held by pre-final meeting was held by Anil Kumar Saab, Secretary Environment, and almost that is through. It's proud moment for me to retire from that place. Thank you very much. I would be in touch with you all during these interactions, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. These interactions. Thank you, Dr. Ravinder. So we have just about 15 minutes left. So I'll request. I think last time. एक बार थोड़ा सा जो हम लोगों को लगता है सब कुछ we have everything in our hand, but somehow the attitude and the training or awareness is missing. How this, because this is the gap. This it is to be segregated at source, and the least use of technology. I would prefer least use of technology and reuse of material for our saving our ground, everything. So somehow the training, how this can be nowadays, every school has an environmental science, every college has environmental science, and the solid waste part is being really a problematic issue for us, and particularly in Bihar, there is not even a secure landfill site as on it. Everything is dumped, everything is collected. As Sanjeev was telling, the collection is 100%, but no treatment, no processing, no segregation, no reuse, nothing. Is just simply taking and dumping. So how we can come out of this situation? This is to be looked into. Everything we compare with the Delhi. Delhi is not India. We have to consider the entire India, and how this rule can be made sustainable, and how the people can be made responsible. That is the part I would like to look forward. Thank you so much. Thank you, sir. I think we should have more focus towards the composting and the biomethanation, because the decentralized plan can be, managed properly in decentralized way, and instead of the kind of a central collection system where waste trucks goes around 15-20 kilometers away, and for any kind of processing management, it should better to go for the more on the decentralized composting system, decentralized biomethanation system, where the locally that can be used as a resource. Either particularly biodegradable waste can be either converted to compost that can be reused in the local horticulture people, or the biomethanation where some kind of biogas is generated and that can be reused for kind of some heating or some kind of a cooking system. That's very, very important, and these has to be a complete chain. With the end user also. Otherwise, if you making the compost and no end user, or I think government Ministry of Fertilizer also giving kind of some kind of incentive and for this kind of system also, and similarly for biomethanation, if it is not being used, so this should be a complete chain. This is very, very important to have a decentralized system. Or the centralized, it should be CBG system. Just like Indore, they have done for entire the biodegradable waste, they have compressed biogas system, and where they are supplying particularly the gas to, compressed biogas to the
transport system, about 400, I think, buses are being run by that kind of thing system. So that model is there. I mean, this is good too. I mean, CBG, if it is there, but definitely it's a lot of money required, and I think investors are coming forward also. So these are very, very important. So I know request. Sir, can I add one more thing? Actually, yeah, Dr. Ravinder, yeah. As you are very much aware about the Indian Pollution Control Association, Director Jain, actually they have this robust system of collection and using this plastic waste into making some even bags, as well as some containers, as well as some suits, and also. So that kind of thing is going on, and people like Dr. Jain, Amit Jain, and people like Sanjeev Kumar would be helping in doing that thing. But the thing is, individuals have to be sensitized. They should always feel that we are responsible for this, creating this muck, and we should clear it. And nobody is going to do away with these things. Only individuals can do that type of job, and we are all supposed to be sensitive, sir. I think that Dr. Ravinder was the Bhagidari program with the government of Delhi started. So with this, that time, lot of workshop and so much, I mean, the sensitization was there. People were very coming forward to that. I don't know, this program was continued because of so many reasons. We also understand. Sensitization programs are going on, sir. We conduct webinars, we do, but the individuals have to practically implement those learnings. That's the problem. Yes. So thank you. I know Ashish Jain very well. So he's really doing business with the plastic waste management, and the way he is supporting the society, it is really encouraging for all of us. We can also invite him for when we will be discussing about plastic waste. No, Sasa, we have just invited so many other programs also. He has given the So he's the right person. Basically, for plastic and things, we'll invite him. We'll do one kind of one or two sessions, so that will invite him. And the success stories to all the municipalities also. Yes. That is very important. Yeah. So we know that the Sanjeev Kumar ji, Ashish Jain ji, and other people working on the ground with these all kind of stakeholders. So very, very important contribution they're doing that. So thank you so much. So I'll, before going to request Parthosh Tyagi sir, just to sum up. So I'll request somebody. I mean, anybody want to say, Neeraj ji or Lokesh ji, anybody want to say anything? So before that, if you want to anybody say, maybe we have 2-3-4 minutes. We can just जिस लोकेश जी से पहले मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली जैसी जगह में अभी तक जो म्युनिसिपल बॉडी है उनको रिसाइकलिंग की एक करनी चाहिए। वो रिसाइकलिंग के प्लांट ही नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, जबकि हैदराबाद में है, इंदौर में है। तो दिल्ली एक कैपिटल है, यहाँ पे रिसाइकलिंग होनी चाहिए। और जो प्लास्टिक है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक जानी ही नहीं चाहिए, जिससे फ्यूरॉन्स वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है बाद में वो ना आए। तो ये जो नॉट रिसाइकलिंग है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। एंड डिफरेंट कंडीशन नीड डिफरेंट मेथड। रिसाइकलिंग कैन हैव एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इफ इट इज डन सस्टेनेबली। जापान का हम एक एग्जांपल लें, जापान में काफी लोग गए भी है, वहां पे सेग्रीगेशन बहुत अच्छा है और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग, वो प्लास्टिक से ऑयल भी तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ताइवान में, थाईलैंड में, मलेशिया में मैक्सिमम प्लास्टिक वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, वेस्ट प्लास्टिक। तो हमारे इंडिया में भी ये जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी खत्म करके कुछ नई सोच होनी चाहिए और रिसाइकलिंग पे ध्यान देकर के ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो मैं कुछ बोलना जी सर, पॉइंट ये बताई भी है कि स्पीकर्स ने कहा कि इंटेंशन का प्रॉब्लम है एट द ग्राउंड लेवल।
तो मुझे लगता है कि इसको हमें एक रेवोल्यूशन लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अवेयरनेस को। केवल एकेडमिक डिस्कशंस या एक्सपर्ट लेवल से काम नहीं चलेगा। उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। मैं एक पेपर पे भी काम कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली कीपिंग इन दिल्ली इन माइंड, कि ये जो एनजीओज हैं, जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, हमें इनके थ्रू लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। और एक चीज जो डॉक्टर अनिल ने कही कि डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, कि इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो इनके यहाँ लगानी पड़ेंगी। बड़े बड़े जैसे मंदिर हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्षरधाम है, या और भी बहुत सारे मंदिर दिल्ली में हैं। आई मीन इंडिया लेवल पे देखेंगे तो वी नो दैट, एंड सम ऑफ देम आर डूइंग इट आल्सो। जैसे श्री श्री जी का काफी काम इसमें चल रहा है, मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो इसमें जो अवेयरनेस है, इसमें हमें एक रेवोल्यूशन लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिसमें हमें स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होगी कि हमने साल में एक बार कर दिया या महीने में एक बार कर दिया। तो मुझे लगता है कि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं लास्ट में एक बात कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा, कि हमें इसमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में वेस्ट पर बात हो रही थी, ये आई थिंक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल विल भी हमें चाहिए होती है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो बस मेरा इतना ही सबमिशन है। थैंक यू सो मच सर। आपका म्यूट है। सॉरी, थैंक यू लोकेश जी। और अच्छी बात बताई, और मैं इसको आपको ग्रुप में भी अभी ऐड कर लूंगा, सो दैट कि आपका कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप में हमेशा रहे। अब मैं आज नंबर आपका नीरज जी से लेकर के आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा, सो दैट कि आपका फ्यूचर में भी हम कंट्रीब्यूशन आपका रहे और इसको डिस्कस करते रहेंगे। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गुरु, हमारे मेंटर श्री पार्थोस त्यागी सर से, आज जो है मैं चेयरमैन ऑफ द आज सेशन के, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट एक 5 मिनट्स में जो आपके व्यूज हों एज सम अप, क्या आप उसका एक कंक्लूडिंग है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्थोस त्यागी सर से, वो अपने एक्सप्रेस करें। सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार, आपको और बाकी सब साथियों को नया साल बहुत मुबारक हो सर। आपको जी सर। इतनी बातें और इतनी अच्छी बातें कही गई हैं कि मेरे लिए बड़ा भारी टेस्ट है कि मैं उसे 5 मिनट में समराइज कर दूं। और मेरी ये भी इच्छा थी कि एक दो बातें जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था वो भी कहूं, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए अगर 5 मिनट से ज्यादा बोल जाए। अरे सर, बिल्कुल सर, आपका। तो एक तो ये है कि जो वेस्ट की बातें आती हैं, तो हैजार्डस वेस्ट का अलग से डिस्कशन होता है, बायोमेडिकल का अलग से, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से, सीएनडी का अलग से, म्यूनिसिपल का अलग से। और ये वेस्ट जो है बहुत दफे ऐसी हैं कि जो एक जगह भी हैंडल की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए स्पेस एनफ हो सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मेरा कहना था कि हमारे पास इतने सारे एक्सपर्ट्स नहीं होंगे म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर कि जो इन सब को सेपरेटली इन एक्सपर्ट मैनर हैंडल कर सकें। इसलिए वी शुड आल्सो थिंक ऑफ सॉलिड वेस्ट एज ए सिंगल सब्जेक्ट। दूसरी बात ये कि संजीव जी ने जितना अच्छा कहा है, कोई बात रह नहीं गई जो कवर ना हुई हो। ट्रैकिंग, सेग्रीगेशन, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, सभी बातें। उसमें सिर्फ मुझे अपनी एक कमेंट इंसिनरेशन के बारे में करनी है। और नीरज जी ने भी कहा कि प्लास्टिक भूल से भी पीवीसी वहां चला जाए तो it will be very, very harmful, the emissions that come. Moreover, बना देना ये कोई बहुत बुद्धिमानी की चीज नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके टेक्नोलॉजी में there should be great hesitation to go for incineration. दूसरा ये कि जब ये चीजें सेग्रीगेट की जाती हैं तो लिंक विद इंडस्ट्रीज दैट कैन यूज collected materials as raw materials, ये लिंक जो है डेवलप नहीं होता है। वहाँ पर वेस्ट में भी एक रिफ्यूज है जिसको कि फिर बाद में वहीं दबा दिया जाता है, जबकि उस जिसको दबा दिया जाता है उसमें अभी भी यूजफुल मटेरियल फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं। तो दिस आइडिया ऑफ सेग्रीगेटिंग
and segregating and also making use of what has been generated after treatment, that should penetrate as deep as possible. अपनी तरफ से मुझे आइडिया ये देना था कि ये वर्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ने बड़ा तबाह किया हुआ है, क्योंकि इसने ये कंसेप्ट दिमाग में डाल दिया है कि ये सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल लेवल पर ही होंगे। लिहाजा पहली बात तो होती है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो, और दूसरी बात ये होती है कि उनका कहाँ पे सेग्रीगेशन हो, घर वाले करके दे या कलेक्ट करने वाला करके दे या कौन करके दे, इसके ऊपर हमेशा एक झंझट रहता है। मेरा ख्याल है ये पॉलिसी ऑफ वन शर्ट फिट्स ऑल नहीं चलेगी, और अब जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा है और हाउसिंग एस्टेट्स आ रही हैं, और उन हाउसिंग एस्टेट्स में सर्विसेज इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पॉसिबल है मेंटेन इंट्रोड्यूस करना और मेंटेन करना। तो उसलिए ये कि हम उसे म्यूनिसिपल लेवल पर ही डील करेंगे, उसकी जगह एक चेंज इन दी वर्ड हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट will be better, and I think this is used in some countries. The moment you say household, you can imagine that there can be kothis which can consume practically all material, या उनके अखबार हैं वो बिक जाएंगे, जो फिर भी रह जाएगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी होगी, और उसका वो ज़्यादातर ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि प्यूट्रीफाई नहीं करेगी, डिकम्पोज नहीं करेगी, बदबू नहीं पैदा करेगी। अगर वो एक जगह इकट्ठा कर लें और लोग, जैसा कि मैं कह रहा था, जो उसे कलेक्ट करके फर्दर सेग्रीगेट करके टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का काम करें और उस सर्विस को चार्ज करें, तो ये पॉसिबल होगा कि फ्रॉम हाउस होल्ड टू हाउसिंग सोसाइटीज टू मोहल्लाज टू ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल लेवल, ये डिपेंडिंग अपॉन वेयर व्हाट सिस्टम फिट्स बेस्ट वो करना चाहिए। मुझे इसमें परेशानी दिमाग में ये आती है कि संजीव कुमार जी जैसे आदमी कितने अवेलेबल हैं इंडिविजुअल म्यूनिसिपैलिटीज को, अगर नहीं है तो वहां पर इसको या तो कोई डॉक्टर हैंडल करता है, यूपी में तो यही सिस्टम है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है, या जो बिल्डिंग एंड रोड्स हैंडल करता है उसके लिए एक साइड जॉब, और वो खुद तो कभी भी इसको नहीं देखता, उसके असिस्टेंट या उसका असिस्टेंट उसे देखता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट इन द म्यूनिसिपैलिटी। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डॉक्टर साहा ने सही कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो तो बेटर है, और मैं भी इस पर बड़ा जोर दे रहा हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, मगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है वो विद एक्सपीरियंस इतना स्किल्ड हो गया है कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया जाए। उसके बिना ये नए रिक्रूट्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल एज वेल। आप देखिए बम्बई का खाना दफ्तरों में पहुंचाने का काम किस कदर हाईली टेक्निकल है, हैंडल्ड बाय टोटली qualified people, but they are so well organized and trained and have experience. तो वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि do not condemn the unorganized sector, utilize them. Then decentralization, जो कि डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, बायोमिथेनेशन, कंपोस्टिंग, ये सब बेहद इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेंट्रलाइज की जगह जितना डिसेंट्रलाइज होंगे उतना अच्छा होगा। एक सबसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है उस वेस्ट को जिसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, जो कि डिकम्पोज करता, फाउल स्मेल पैदा करता, और सेग्रीगेट करके उनको, जो कि ये नहीं करते हैं, उनके लिए बाकायदा कलेक्शन, फर्दर सेग्रीगेशन एंड यूटिलाइजेशन किया जाए। ये जो रेवोल्यूशन वाली बात है, ये मोस्टली इट विल लीड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स रादर देन टेक्नोलॉजी, एंड if it supports this system, well and good, but otherwise shouting has not really created results other than a lot of disturbance. तो मैं बहुत उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अगर इस
से फायदा होता हो, I will withdraw my words and let it continue. Thank you very much. I do not know how much time I have taken. Thank you, sir. Thank you very ma'am. much for so well summarizing. तो हमारे ग्रुप पे बहुत ग्रुप आपके की जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे अभी तक, और हम लोग भी उसी आपके रास्तों बताए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, तो मिलके करेंगे। नेक्स्ट में हमारा एक और सेशन इसमें, बिकॉज प्रदीप खंडेलवाल जी का एक पॉइंट था, चैट में डाला भी था, ये रीजन फॉर फेल्योर्स को हम नेक्स्ट में डिस्कस करें, तो हम ये चाहेंगे कि एक सेशन इस पे और रखेंगे हम इसमें। तो मतलब हम इतना सब कुछ होते हुए भी हम जो सर ने तो बताया वैसे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि खंडेलवाल जी का व्यू है कि सब कुछ हमारे पास है, मतलब एक्सपर्टीज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और विलिंगनेस भी है, गवर्नमेंट की भी है, और ब्यूरोक्रेसी की भी है, फिर भी हम फेल्योर का हैं, तो वो पॉइंट्स हम एक सेशन और इस पे रखेंगे। तो अगर किसी को थोड़ा सा अगर इसमें इंटरेस्ट है, वी कैन गो थ्रू दैट, कि अपने व्यू एक्सप्रेस करें, तो नेक्स्ट में हम विल कंटिन्यू विद दी रीजन फॉर फेल्योर ऑफ दी दिस काइंड ऑफ जो चैलेंज है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू त्यागी सर, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू संजीव कुमार जी, लोकेश जी, नीरज जी, एंड ऑल एवरीबॉडी। सो हम नेक्स्ट संडे इसी टॉपिक को फिर कंटिन्यू रखे हुए फिर मिलेंगे। सबका धन्यवाद करते हुए ये डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की आज